Okay, you see here I have connected 3 blocks are in parallel. ଯେତେବେଳେ 3ଟା ବ୍ଲକ୍ ପିଲାମାନେ parallel ଥିବ ଦେଖ first block G1s, second block G2s, third block G3s. 3ଟା block ଏଠି parallel ଅଛି means blocks are in parallel connection. 3ଟା block input signal ଦେଲେ ଆମେ RS, output signal କେତେ ଦେଲେ CS ଦେଲେ. Okay, 3ଟା ପୁଣି block ଦେଖ ଗୋଟେ summing point ଲାଗିଛି. Summing point ସବୁ plus ଅଛି. Plus means G1s this signal is positive signal. 3ଟା ପୁଣି signal ଅଛି positive signal. Even using summing point ମୁଁ ତମ summing point ରେ କହିଥିଲି summing point ମାନେ ହେଉଛି ଏଠି ତ summing point ର କ'ଣ requirement when 2 or more signals you have to add it ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା କି ଅଧିକ signal add କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଆମେ summing point ର ବ୍ୟବହାର ନବା summing point sum these signals. Okay, you see means in this case 3 blocks are rule 2 ରେ ଆମର 3ଟା block parallel ଅଛି 3ଟା block parallel ଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକର block transfer function ଆମେ ଜଣା ଥିବ G1s, G2s, G3s ତେଣୁ ଆମର ସେ କହୁଛି what is the resultant block transfer function. এই ক্ষেত্রে কোণ হব 3টা ব্লক যদি প্যারালাল আছে রেজল্টান্ট ব্লক ট্রান্সফর ফাংশন ভ্যালু হব জাস্ট আড দি অল ইন্ডিভিজুয়াল ব্লক ট্রান্সফর ফাংশন আড অল প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল ব্লক ট্রান্সফর ফাংশন যেটা থিব সমস্ত আমি আড করে দেবা G1s, G2s, G3s. एक्चुअली G1s प्लस नौ आम कहीं आम ये कौन करवा तमाने व्हाट यदि 3टा ब्लॉक आम कन्वर्ट कर देबा गोटे सिंगल ब्लॉक को इट बिकम्स ए सिंगल ब्लॉक. इफ 3 blocks are becomes a single block by block reduction method. So output is CS, input signal is RS. Block reduction method आम ताको 3टा ब्लॉक गोटे सिंगल ब्लॉक है तो रेजल्टेंट ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन केते वैल्यू होबो ना 3टा पुनी इंडिविजुअल ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन का जस्ट ऐड कर दबा यू ऐड द इंडिविजुअल ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन दैट इज रिटन हियर. You see when the blocks are cascade or parallel blocks are parallel the resultant block transfer function is the sum of individual block transfer function. You see then what is the resultant block transfer function 3टा पुनी ब्लॉक भर का मिसाई दबा G1s first block G2s second block third block रो केते रे G3s. So G1s plus G2s plus G3s आमे सब प्लस का नेले बिकॉज़ सिग्नल्स आर पॉजिटिव सिग्नल्स यदि माइनस थांता त हम सब्स्टिट्यूट करि परथंते. Okay, so means here when the blocks are parallel at that time the resultant block transfer function can पाइबा individual block transfer function just हम add कर दबा we added the individual block transfer function value. एमिति मेथड रे by this method I can reduce 3 blocks parallel to become a single block. then 3 blocks parallel थला ताको हम कोन कर देले गोटे सिंगल ब्लॉक कन्वर्ट कर पाले we can convert into a single block by the blocks are in a parallel method. Okay, so we go to the next rule. Rule 3. You see, Rule 3 means moving a taker point ahead of a block. Moving a taker point ahead of a block. Ahead means you see here, if a taker point there, you see, if a taker point is moved ahead of a block with the same transfer function will introduce in the branch of the taker point. Okay, you see, means आबे जते बळे move a taker point ahead of a block. गोटे ब्लॉक पर गोटे टेकअप पॉइंट थी तुमको कही टेकअप पॉइंट कौन पे यू सी सो लास्ट क्लास तुमको कही दिस टेकअप पॉइंट यू सी हियर दिस द टेकअप पॉइंट ये टेकअप पॉइंट मीन्स ये टेकअप पॉइंट इफ वन सिग्नल गोटे सिंगल सिग्नल तुमको 2 और मोर ब्लॉक को दबार थी गोटे सिंगल सिग्नल 2 और मोर ब्लॉक को दबार थी तुम यूज कर टेकअप पॉइंट. समिंग पॉइंट तुम पे कही लास्ट क्लास समिंग पॉइंट दिस समिंग पॉइंट समिंग पॉइंट plus or plus summing point sum 2 or 3 signals. तो हम जते कोन देखिबा ना टेकअप पॉइंट ahead of a block हमर बर्तन टारगेट होची वो टेकअप पॉइंट कोन करबा when टेकअप पॉइंट shifted ahead of a block means you see just I am just explaining by the figure you see just here look here a block is here whose output is CS whose input is RS. Okay, so here let you see the taker point is present. This is how much students you also CS. Okay, this will have much GS. You see. So this case you see. So means this here taker point is present. You see. After the block, I shifted to before the block. Means I shifted the moving of a taker point ahead of a block. Ahead means before a block. I shifted to before. I shifted to
before a block. I just shift before a block. Means just I shift takeoff point right to left a block. Right to left a point. What happens here? If a takeoff point is moving ahead of a block or right to left of a block, you remember. So a block with the same transfer function will introduce in the branch of a takeoff point. You see this figure, if I shifted this takeoff point, right side takeoff point, I shifted to first of the block, ahead of the block. Okay, what is the figure you see? Block value remains same, CS. What is the output? CS. What is the input signal? RS. So block you shifted to here. Block is shifted to you. Just you shifted the takeoff point ahead of the block. So means right to left of a block. What happens here? Means the takeoff point branch you introduce a in the takeoff point branch you introduce a same block transfer function value. In the takeoff point branch I introduce same block transfer function value. You see? So पिला माने देखो here CS output signal केते input signal RS into GS, that is CS. But you see the second picture second block रे जो block टा GS add कले takeoff point branch रे तार input signal केते RS GS is equal to CS. ता माने आमे एटी कोन कंक्लूजन पाइले जदी गो टेकअप पॉइंट टा आमे ahead of block आनिबा right to left block right side थिबो right रे थिबो आम शिफ्टिंग करिया left right to left ने आसीबो ahead of a block. At that time in the takeoff point branch रे तमे गोटे कोन करिवो सेम ब्लॉक ट्रांसफर वैल्यू ऐड करिवो जो ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू प्रथम थिबो ब्लॉक रो सेम ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू यू ऐड इन द takeoff point branch. That is right to left shift kariyo means ahead of a block. Okay, this is the rule 3, moving of a takeoff point ahead of a block, right to left of a block. So this case means same block transfer function you added in the takeoff point branch. So this is the rule 3. If you go to rule 4, you see. So rule 4 is there. You see rule 4, moving a takeoff point after a block means left to right of a block. You see. Here is a figure there, here you see a block is here GS, the block has output signal is CS, the block had input signal is RS. Okay, so here what happens, moving a takeoff point after a block means takeoff point is present where? Takeoff point is present left side of the block. This is also RS. Can takeoff point पिला माने कौन दिए same signal, a signal RS अच्छी. Then takeoff point branch रे कौन भरिव signal? Also here we are getting also RS. Okay. बर्तन takeoff point अच्छी left side रे, block रो left side रे. Means before the block. मु ताको shifting कौन करिवी after the block. Moving a takeoff point after a block. Block को after करिवी after the block. ब्लॉक पर को शिफ्ट कर देबी लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करबी तने कोन हबो जदि वो टेकअप पॉइंट लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करिवो बा आफ्टर ए ब्लॉक तो नै जे ब्लॉक आरपट को नै जिवो आफ्टर ए ब्लॉक देन टेकअप पॉइंट ब्रांच रे तम रेसिप्रोकल ट्रांसफर फंक्शन ऐड करिया पड़ो रेसिप्रोकल जीएस जो ट्रांसफर फंक्शन अछि मूल ट्रांसफर फंक्शन मेन ब्रांच रे ता रेसिप्रोकल गोटे ट्रांसफर फंक्शन टेकअप पॉइंट ब्रांच तम ऐड करिया पड़ो यू सी हियर इफ ए टेकअप यू सी डेफिनेशन व्हाट रिटन ए टेकअप पॉइंट इज moved after a block means left to right of a block. If a block after a takeoff point shifted कर देबी a block with reciprocal transfer function will be introduced in the branch of takeoff point. You see what happens here? बर्तन मु takeoff point कोड शिफ्ट करी पिला माने after the block after this block कौन फिगर हम देखिबा फिगर जे देला GS इनपुट सिग्नल पिला माने केते RS थिला GS र आउटपुट पिला माने केते थिला CS थिला जहा थिला से मु कोन करबी टेकअप पॉइंट को मु कोन करबी आफ्टर द ब्लॉक नै गली ता टेकअप पॉइंट टे शिफ्ट कर देली मुसने शिफ्टिंग कर देली किन देखो लेफ्ट साइड देखो टेकअप पॉइंट रो आउटपुट सिग्नल कोन আছে टेकअप पॉइंट रो सिग्नल दा बाहर केते RS टेकअप पॉइंट रो केते सिग्नल बाहर छी फॉर द सिग्नल ऑफ टेकअप पॉइंट RS किंतु एठी जो मु टेकअप पॉइंट राइट आफ्टर शिफ्ट कर देली लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर देली ब्लॉक पर को मु टेकअप पॉइंट उठा देली देखो टेकअप पॉइंट रो केते बाहर छी व्हाट इज द सिग्नल ऑफ टेकअप पॉइंट in the takeoff point you see the signal is CS because ऊपर CS अछि takeoff point भी CS जिवो तने मु कोन करबी
टेकअप पॉइंट ब्रांच रे मु गोटे रेसिप्रोकाल भर्ती करबी 1/GS 1/GS व्हिच इज इक्वल टू CS पिला माने देखो ताले देखो ब्लॉक पर केते सिग्नल बाहरिबो आफ्टर द ब्लॉक RS * GS सेटा आसी पहुंचला 1/GS रे तले ब्लॉक पर केते बाहरला मीन CS टा केते पिला ए ब्लॉक पर केते बाहरला RS * GS okay so here is sorry CS this is value is so what is the take up point value what is the take up output is RS take up output is RS here you see means you just remember here if a take up point shifted left to right of a block or a take up point shifted after a block at that time we add a new block in the take up point branch with a reciprocal transfer function of the original transfer function. So original transfer जो GS थिला GS reciprocal 1/GS आमे गोटे take up point branch रे इंट्रोड्यूस कर दो ओके काहे देखो तुम take up point branch रे केते पिला बाहर छ आउटपुट सिग्नल RS किंतु एठी जदी आमे take up point ब्लॉक पर को शिफ्ट कर दबा एठी केते बाहरिबो एठी बाहरिया पिला माने दिस इज CS you see this value is CS किंतु हमर टेक अप पॉइंटर कोन बारे दरकार तुम शिफ्टिंग करिवो किंतु देखो सब सिग्नल का सेम रहइबो जेम आउटपुट बार CS टेक अप पॉइंटर बार RS इनपुट जे RS तुम जहां शिफ्टिंग करो सब सिग्नल जो सिग्नल बाहर थो आउटपुट सिग्नल सब रिमेन्स सेम आउटपुट सिग्नल चेंज न होबो किंतु मु टेक अप पॉइंट को ब्लॉक पर को नै गली और टेक अप पॉइंट ब्लॉक पर को नै गली टेक अप पॉइंट ब्रांच रे केते बाहर CS बाहर किंतु मोर RS दरकार पिला माने CS रे कौन मल्टीप्लाई कले RS हबो यू सी CS रे 1/GS मल्टीप्लाई करते कारण तुम जानिछ ए फिगर देखो पिला माने एठी दिस फिगर फर्स्ट फिगर रे पिला माने CS केते रे फर्स्ट फिगर रे पिला माने CS के आउटपुट सिग्नल इनपुट इनटू GS हम जानिछे जे कोन से ब्लॉक रे तार इनपुट सिग्नल इनटू ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू केते आउटपुट सिग्नल तो ये देखो फर्स्ट ब्लॉक देखो CS केते RS इनटू GS तने ये जो CS टा पिला बाहर टेक अप पॉइंट रे आफ्टर शिफ्टिंग तने CS केते बाहर RS इनटू GS हमर कोन दरकार टेक अप पॉइंट ब्रांच रे टेक अप पॉइंट ब्रांच रे हमर RS दरकार किंतु टेक अप पॉइंट ब्रांच रे कोन बाहरला RS CS काने जो CS बाहरला पिला माने हटे CS इज इक्वल टू RS इनटू GS किंतु मोर RS दरकार पिला माने टेक अप पॉइंट शिफ्टिंग कला पर कोन बाहर RS GS बाहर किंतु मोर दरकार RS यदि RS GS देछि मु खाली RS दरकार कोन करबी 1/GS मल्टीप्लाई कर देबी अरे तुम मान पाखरे खाली अछि RS GS ओके तमे चाहुच खाली RS तुम दरकार खाली RS कोन करबो ता सते कोन मल्टीप्लाई करबो मल्टीप्लाई को 1/GS कैंसिल हो गला कोन हो RS तनो RS GS सिग्नल को एते ब्लॉक भीतर भर्ती करबी RS GS * 1/GS तेणु टेक अप पॉइंट ब्रांच रे मु गोटे रेसिप्रोकल ट्रांसफर फंक्शन ऐड करिया पड़िबो तेबे जाके इक्विवेलेंट हो तेबे शिफ्टिंग कले किछि प्रॉब्लम होबना सो टेक अप पॉइंट इफ शिफ्टेड टू आफ्टर ए ब्लॉक इन द टेक अप पॉइंट ब्रांच यू पुट ए रेसिप्रोकल ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू ऑफ द मेन ट्रांसफर ब्लॉक वैल्यू मेन ट्रांसफर ब्लॉक वैल्यू दैट इज द rule we discuss about rule 3 if you go to rule 4 you see rule 4 means you see Mogvi a take up point after a block we discuss only rule 4 then you go to rule 5 the rule 5 here rule 5 here so rule 5 means moving a summing point after a block you see rule 5 is here moving a summing point after a block moving a summing point after a block means you see here if block is here you see I just draw a figure here moving a summing point after a block that is rule 5 you see a block is here गोटे ब्लॉक एटी पिला माने थिला मु कोन करबी रूल 5 रे समिंग पोटा को मु शिफ्ट करबी मूव करबी आफ्टर ए ब्लॉक माने ब्लॉक पूर्व थिबो समिंग पॉइंट ब्लॉक पर को शिफ्ट करबी लेफ्ट रो थिबो मु राइट शिफ्ट करबी देखो एटा ब्लॉक अछि पिला माने समिंग पॉइंट कोड अछि मु आफ्टर को शिफ्ट करबी ना समिंग पॉइंट को पटर अछि पिला माने समिंग पॉइंट लेफ्ट साइड रो अछि यू सी हियर समिंग पॉइंट इज लेफ्ट साइड हियर ओके मन कर समिंग पॉइंट केते सिग्नल जाउची x सिग्नल
this signal is y signal. Okay, so this is summing point here. This is x signal is a plus signal, y signal at a minus signal. Okay, so what is the output of a summing point? X minus y. Summing point पे मैंने केते बाहरला output of summing point. Summing point रो input है x signal. Summing point रो out signal है y. दीटा signal को हम add कले summing point x y. तने summing point रो output केते बाहर x minus y. ताटे block भीतर pass कले. Block भीतर pass कले. Block रो जो बाहरला this value is CS is output. तने summing point कोड पे लावन अच्छी. इट summing point अच्छी before the block. मु ताको shifting करी कोडी after the block. देखिबा मु आफ्टर ब्लॉक कले कोन हबो आफ्टर ब्लॉक ने कोन हबो समिंग पॉइंट शिफ्ट टू समिंग पॉइंट तो सिग्नल एंट्री करछि केते केते एक्स वाई समिंग पॉइंट रो इनपुट सिग्नल है एक्स वाई ताके मन लक्ष्य मन देख समिंग पॉइंट रो इनपुट सिग्नल जी एक्स वाई एक्स पॉजिटिव सिग्नल वाई नेगेटिव सिग्नल दीटा सिग्नल मिसी की केते हला एक्स माइनस वाई एवं समिंग पॉइंट जो एक्स माइनस वाई बाहरला ताके ब्लॉक को देली ब्लॉक रो आउटपुट केते बाहरला पिला माने सीएस बाहरला ओके हियर जी हियर तो मत मत को ब्लॉक रो सीएस वैल्यू केते व्हाट द ब्लॉक वैल्यू ब्लॉक रो इनपुट केते होची यदि ब्लॉक रो इनपुट वैल्यू म कहबी इनपुट इज आरएस ब्लॉक रो इनपुट के आरएस ना नहीं ब्लॉक रो ओके तो मत कहो ताले सो व्हाट इज द सीएस वैल्यू हियर कैन यू टेल मी व्हाट इज द सीएस वैल्यू हियर द सीएस वैल्यू इज इक्वल टू दिस के सीएस इज इक्वल टू ब्लॉक रो इनपुट केते x माइनस y अरे ब्लॉक रो इनपुट केते x माइनस y इनटू ब्लॉक वैल्यू block or input into block value is equal to output means CS is equal to x minus y into GS CS देखो x minus y into GS तमे बर्तन समिंग पॉइंट कौन करिवो आफ्टर द ब्लॉक मूविंग ए समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक एमी तमे शिफ्टिंग करी आफ्टर द ब्लॉक कला पर भी से आउटपुट जिम सेम थिवो आउटपुट समान रहबो तमे शिफ्टिंग करिवो देखिवो बर्तन आई ड्रॉ हियर यू सी आई जस्ट शिफ्टेड हियर समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक you see a block is here I shifted the block so block is here मु ब्लॉक पर को कोन समिंग पॉइंट नै जिबी ब्लॉक पर मु लगे देबी समिंग पॉइंट ब्लॉक वैल्यू जहा तला पेला माने सर एबो जीएस ओके ठीक अछि हला ब्लॉक पर मु समिंग पॉइंट शिफ्टिंग कर देबी समिंग पॉइंट शिफ्टेड टू आफ्टर द ब्लॉक ओके समिंग पॉइंट इज शिफ्टेड टू आफ्टर द ब्लॉक ओके ओके हियर समिंग पॉइंट दिरा पॉइंट you see here okay okay तो माने मत एटी कुहो व्हाट हैपेंस इन दिस केस जदि तमे समिंग पॉइंट रो कोन सिग्नल जो दरकार यू सी समिंग पॉइंट रो कोन बाहरची सो व्हाट द आउटपुट हो दरकार आउटपुट ला हाउ मच CS द आउटपुट वैल्यू जी CS हियर ओके तमे ए जो प्रथम पिक्चर रे मते मल्टीप्लाई कर देबी टाको कोन हबो xgs माइनस इट वैल्यू इज इक्वल टू xgs माइनस ygs तुम देखो x into gs x into the block value gs y into the block value gs देखो सेमती प्रथम एटा इनपुट सिग्नल कोन थला x थला पैरेलल कोन x अछि इनपुट सिग्नल मुसना खाली समिंग पॉइंट शिफ्ट कली इनपुट सिग्नल कोन x अछि x रहला x into gs एटा कोन थला समिंग पॉइंट रे प्लस थला समिंग पॉइंट प्लस एटा समिंग पॉइंट कोन थला माइनस थला ओके तो बर्तमान पिला माने मु कोन करबी समिंग पॉइंट रो मु कोन दोची गोटे x देची गोटे y देची ओके तने एठी कोन करबो ना समिंग पॉइंट ब्रांच रे गोटे सेम ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू एल करबो सेम जेतले समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक शिफ्टिंग करबो लेफ्ट टू राइट समिंग पॉइंट लेफ्ट टू राइट ऑफ ए ब्लॉक आफ्टर द ब्लॉक बिफोर ब्लॉक समिंग पॉइंट अछि मु त कोन शिफ्ट करबी आफ्टर द ब्लॉक पर को शिफ्ट कले मन लखो से समिंग पॉइंट ब्रांच रे गोटे सेम ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन आम ऐड करिया पड़ो देखो हियर तले बता हियर हाउ मच y देखो इनपुट सिग्नल पिला माने कोन थला समिंग पॉइंट फर्स्ट फिगर xy एठले xy तने फर्स्ट ब्लॉक पर केते बाहरिबो प्रथम ब्लॉक रो केते बाहरिबो xgs सेकंड ब्लॉक रो केते बाहरिबो ygs किंदिरा प्लस माइनस अछि नै
तेणु एक्सजीएस माइनस वाईजीएक्स हो आम देख एक्सजीएस माइनस वाईजीएस केते सीएस तमें ये आम कन्फर्म हेले जदि गोटे समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक को शिफ्ट करवा तेले समिंग पॉइंट ब्रांच रे आम सेम ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू यूज करवा सेम ऊपर जो जीएस थिला सेम जीएस एड करवा सेम इनपुट सिग्नल एस वाई जहाँ सेमती इनपुट एक्स वाई अच्छी बाम पटे दीटा डाण पटे कौन बाहर आउटपुट रे सीएस सीएस रहा खाली समिंग पॉइंट ब्लॉक पर को नहीं गल सो तुम जिते शिफ्टिंग कर समिंग पॉइंट बिफोर आफ्टर सब मन रख आउटपुट सिग्नल रिमेन सेम हो आउटपुट सिग्नल सब रिमेन सेम आउटपुट सिग्नल के देखे पे एक्सजीएस माइनस वाईजीएस इज इक्वल टू सीएस फर्स्ट फिगर में से बढ़ी एक्सजीएस माइनस वाईजीएस इज इक्वल टू सीएस so this is the process so that summing point can shifted after a block kole ame kon kariba na will introduce in the branch of a summing point same transfer function value ame branch of summing point add kariba okay this case is here then we will discuss about rule 6 you see the rule 5 completed now I go to rule 6 so there are rule 6 there what is rule 6 moving a summing point ahead of a block ahead means before a block okay if a summing point is moved ahead of a block or before a block you remember in the summing point branch with a block you are introduce a block with a reciprocal transfer function value if you shifted summing point right to left a block or ahead of a block just reverse rule 5 reverse rule 5 रे कोन थला हम लेफ्ट राइट शिफ्ट करते summing point root 6 से कोन करिवा right to left shift करिवा ना ahead of a block you see here यदि आम गोटे बर्तमान यू सी आई जस्ट एक्सप्लेन बाय ए फिगर ए ब्लॉक इज हियर ब्लॉक वैल्यू जीएस कौन लिखाई मूविंग ए समिंग पॉइंट एहेड ऑफ ए ब्लॉक ताने कौटी प्रथम अच्छी तापर अच्छी आफ्टर अच्छी मुझे एहेड आनु फास्ट को नहीं आसबि ब्लॉक पर समिंग पॉइंट कौन अच्छे पे ब्लॉक पर मुझे कौन करी प्रथम पिक्चर फास्ट पिक्चर इनपुट सिग्नल केते पे इनपुट सिग्नल आरएस input signal here RS here okay so what is the output signal here so the summing point of input is here a plus this is minus here summing point here okay let this signal is excess what signal lagi excess lagi okay so pila mane mate ko cs ta kete output kete cs is equal to it cs kete first block re देखो block ru kete bharla rsgs तले आसला excess summing point रे फेडा हिचे माइनस अछि कारण उपरटा हला प्लस तल एक्सेसटा कौन अच्छी माइनस अच्छी मुझे समिंग पॉइंट एक्सेस तले सिग्नल दीजिए तेना यहाँ कौन आउटपुटा आरएस इंटू जीएस माइनस एक्सेस दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस पिक्चर समिंग पॉइंट राइट साइड अच्छे मुझे कौन करी समिंग पॉइंट लेफ्ट को शिफ्ट करी एहेड ऑफ ए ब्लॉक कौन करी यदि एहेड ऑफ ब्लॉक करी देख कौन हम एहेड करी ताले दिस इज द ब्लॉक हियर मुझे कौटी शिफ्ट करी पे समिंग पॉइंट एहेड ऑफ ब्लॉक एहेड माने राइट टू लेफ्ट मु ब्लॉक और राइट साइड शिफ्ट कर देबी एहेड ऑफ ए ब्लॉक ता आगो को व्हाट हैपेंस यू सी अरे इनपुट केथला रे पिला माने प्रथम देखो सिग्नल केथला इनपुट जहा थला आरएस एरला इनपुट ब्लॉक रो एटी प्लस माइनस थला फर्स्ट पिक्चर समिंग पॉइंट प्लस माइनस अछि ठीक अछि ब्लॉक वैल्यू केथला पिला माने जीएस ब्लॉक और केते भारतला पिला माने ब्लॉक और भारतला हमस फेरो डाहन पटर कोन बारिबो डाहन पटर आउटपुट बारे सीएस ओके यू सी एट दैट केस कौन कर जब समिंग पॉइंट एहेड ऑफ ए ब्लॉक आग को नहीं आसब समिंग पॉइंट ब्रांच रे तुम गोटे ब्लॉक ट्रांसफर रेसिप्रोकाल ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन ऐड कर रेसिप्रोकाल जो ऊपर जीएस थी तले कौन कर यू ऐड हाउ मच एबीसी सीएस सॉरी दिस वैल्यू इज एक्सेस दिस वैल्यू इज हाउ मच दिस वैल्यू इज इनपुट सिग्नल हियर here this value is excess here excess connecting here excess you connecting excess I mean you just see here if a summing point shifted to ahead of a block or right to left a block in the summing point branch this summing point branch जोटा summing कलो summing point branch रे तमे ऐड करे उटे reciprocal transfer function value okay if a summing point is moved ahead of a block ahead means first block प्रथम पळे आसबो बिफोर द ब्लॉक आगू पळे आसबो एट दैट टाइम कोन करिवो सो ब्लॉक विथ रेसिप्रोकल ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू रेसिप्रोकल मु जो ब्लॉक टा ऐड करिवि समिंग पॉइंट ब्रांच रे द रेसिप्रोकल ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू ऑफ द
original transfer. What is the original transfer function? GS. तार reciprocal 1 by GS. Summing point branch रे 1 by GS ଗୋଟେ block add करदब. That is the process. If you shifted a summing point ahead of a block, means right to left of a block. Block पूर्व को shifting करिवो. Right side थिबो left को shifting करिवो. तो 1 by GS introduce करिवो. Left थिबो यार पूर्व उल्टा हम पढ़िଥିଲେ. Right को shift करिवो. खाली GS introduce करिवो. So this is the process. So that we can shifting summing point take a point, you can interchange their positions. Okay. So now discuss here, this is the rule 6. If you go to rule 7, rule 7 is here.